Class 8 Subject Hindi L2 Unit Grammar Adjective Adjective क्या होता है? With the example. Students, now we are going to study about what is the meaning of adjective. Adjective means विशेषण वे शब्द है जो संज्ञाओं का वर्ण करते हैं. उदाहरण बुद्धिमान. तेनालीराम बुद्धिमान मनुष्य है. In English, what is an adjective? Adjectives are words that describes or modify other words, making your writing and speaking much more specific and a whole lot more interesting. Words like small, blue and sharp are descriptive and they are all the example of adjectives. Now we are going to study about the types of adjectives. विशेषण के भेद. गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण. Now first we are going to study about the गुणवाचक विशेषण. Means quantitative adjectives. गुणवाचक विशेषण विशेषण जो गुण, रंग, आकार, स्थिति, समय, स्थिति या किसी संज्ञा या स्थान के स्थान का वर्ण करते हैं, उन्हें विशेषण का गुण कहा जाता है. एग्जाम्पल, तृप्ति ईमानदार लड़की है. रायापुर बड़ा शहर है. In English, in this word the answer the question how much, how many, numbers like 1 and 30, the types of the adjective. In English, a descriptive adjective is a probably what you think of when you hear the word adjective. The descriptive adjectives are used to describe nouns and pronouns. Words like beautiful, cute, silly, tall, loud, and nice are all descriptive adjectives. Now we move to the second one. Adjectives of numbers. संज्ञावाचक विशेषण. संज्ञावाचक विशेषण किसे कहते हैं? व्यक्तियों या वस्तुओं के संज्ञा व्यक्त करने के लिए adjectives of numbers का प्रयोग होता है, जैसे ही नीचे दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं. It means in English, adjectives are words that modifies or describe nouns and pronouns that we already studied. Here, adjectives of numbers refers to things that can be counted even if it is an indefinite amount in the sentence. Definite adjectives of numbers means there are numbers and amounts, both cardinal numbers and ordinal numbers, 1000, gallon, first, fifth, etc. Now we move to the third one. परिणामवाचक विशेषण. Adjectives of quantity. परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण मीन्स द्वारा उल्लेखित व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के मात्र के बारे में जानकारी देने वाले एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दैट इज परिणामवाचक विशेषण कहते हैं. लार्ज शब्द बनाते हैं कि शहर कैसे है, बड़ा है. इट मीन्स द लार्ज डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ द सिटी. That demonstrative that परिमाणवाचक विशेषण means
Parinamvachak Visheshan, that means adjective of quantity in English. We can define adjective of quantity as adjective of quantity indicates that amount or estimated amount of the noun or pronoun in the sentence. Adjective, or in another way we have to say adjective which shows the quantity of nouns or pronouns is called as adjective of quantity. Last, we move to the demonstrative pronoun, that means संकेतवाचक सर्वनाम. संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इस बात का संकेत करता है कि हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति या वस्तु से है. जैसे वह मेरी बहन है. शी और दैट इज माई सिस्टर. वह यह किताब है जिसके के बारे में मैंने आपको बताया था. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ संकेतवाचक विशेषण. It means demonstrative adjective. Demonstrative adjective means which the noun or pronoun you are be referring to. This used to refer a singular noun close to you, that used to refer to a singular noun far from you. Demonstrative adjectives always come before the word they are modifying. Do you understand, ma? What is the meaning of adjective and the types of adjective? Dhanyavad.